So, good evening, friends. Jai Hind to all of you. So, in continuation of our current affairs through MCQ series, now we are going to take up September 2023 current affairs, and I hope your preparations are going on well. Exam is in just a few days now. So, let's start. So, first question here is Swati Nayak, who was recently in the news, has won which award? So the answer to this is Norman E. Borlaug. So, agricultural scientist Swati Nayak became the third Indian agricultural scientist, okay, to win the prestigious Norman E. Borlaug Award for 2023, okay, in the field of for field research and application with the World Food Prize Foundation. ठीक. Miss Nayak is South Asia lead for seed system and product management at the International Rice Research Institute, India. So there are a couple of facts here. First is Swati Nayak won the Norman E. Borlaug Prize for 2023 in the field research and application category with the World Food Prize Foundation. She is also the South Asia lead for seed system and product management at Indian Rice Research Institute. So the headquarters of this are at. So the headquarters of the Rice Research Institute are at New Delhi. Okay. The Union Ministry, which Union Ministry established Indian Sign Language Research and Training Center? Okay. So which Indian Union Ministry established the Sign Language Research and Training Center? The answer for this is Minister of Social Justice and Empowerment. Okay. In 2011, the ministry established the Indian Sign Language Research and Training Center as an autonomous center of IGNOU. Okay. It has launched online self-learning course in sign language and comprehensive dictionary containing so many words. So, इतना याद रखना है आपको कि this was launched by Ministry of Social Justice and Empowerment as a autonomous center of as an autonomous center of IGNOU. ठीक. Next is E-Unnat. E-Unnat is a service delivery portal of which state or UT? तो ये जम्मू कश्मीर का है. DARPG, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. इसने रिलीज किया है सिक्स्थ एडिशन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, है ना, एंड मंथली इसका रिपोर्ट. तो इट प्रोवाइडेड डिटेल स्टेटस ऑफ e-delivery systems across states, Jammu and Kashmir, Kerala and Odisha. So, Jammu, Kashmir, Kerala and Odisha provide 100% of their services through unified service portals, namely E-Unnat. और कौन सी हैं? E-Sevanam और ओडिशा की 1404. तो E-Unnat है जम्मू कश्मीर की, then E-Sevanam Kerala, and then we have Odisha 1. Odisha 1 is of Odisha. These are three states which are delivering their, kind of facilities, their services delivery through these online portals. Next is, which company launched the Indus App Store development platform? The answer is PhonePe. PhonePe ने ये recently Indus App Store development platform launch किया था, Made in India App Store. So at present the app developers work with only the Google Apple Store, Google Play Store. So for startups and new app launches, Indus App Store will have a dedicated destination called Launchpad to provide these new apps with better visibility. तो जैसे गूगल ऐप स्टोर है, ऐसे ही इंडस ऐप स्टोर ये डेवलप किया है किसने? फोन पे ने
which is a payment gateway. ठीक है. Which city launched the Swachhata Train initiative as a part of Swachhata Pakhwada? तो which city, sorry, the city is Ahmedabad. तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये स्वच्छता ट्रेन लॉन्च की है स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत. ठीक है. इट एम्ड टू रेज कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट विद इन द सिटी. स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत अंडर स्वच्छता पखवाड़ा दिस स्वच्छता ट्रेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. नेक्स्ट इज विच स्टेट एंड यूटी ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल. ठीक है. गोवा ने ऑर्गेनाइज किया है. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज Sarbananda Sonowal, he was the CM of Assam before Mr. Himanta Biswa Sarma took over. CM of Assam is Sarbananda Sonowal. So inaugurated the maiden edition of Bharatiya Prakash Stambh Utsav or Indian Lighthouse Festival at the historic Fort Aguada in Panjim. So it is a part of a vision to transform 75 lighthouses across India into thriving tourist hubs. ठीक है. तो ये एक और आपका एक डेटा पॉइंट है यहाँ पे. फोर्ट अगवाड़ा, वेयर इज इट? पंजिम, गोवा, एंड दैट इज वेयर दिस भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव लाइट हाउस फेस्टिवल was inaugurated. Okay. नेक्स्ट इज विच स्पेस एजेंसी लॉन्च ऑसिरिस एक्स. तो ये नासा, यूनाइटेड स्टेट्स नासा लॉन्च दिस स्पेस क्राफ्ट ऑसिरिस रेक्स. ठीक है. एस्टेरॉयड बेनू टू एक्सप्लोर एस्टेरॉयड बेनू. ओके. तो ये आपने याद रखना है. ठीक है. लॉन्च बाय नासा इन 2016 में लॉन्च किया था ऑसिरिस रेक्स. Now renamed as Osiris Apex. So now it is renamed as Osiris Apex, where Apex means Apophis Explorer. Apophis Explorer. ठीक है. Apophis का मतलब क्या है? When the asteroid comes close to the Earth. ठीक. 2029 में it will come close to the Earth. ठीक. So OSIRIS spacecraft, NASA's mission, successfully delivered 10 samples from the asteroid and set to make its return to Earth. ठीक. Next is which countries are fighting for Nagorno-Karabakh. ये हमने previous lectures में भी पढ़ा है. तो ये आपका अर्मीनिया और अजरबैजान. ठीक है. So Nagorno-Karabakh region lies in the mountainous. So this is very very important. When you see this, just note this down. This question should not be incorrect. The Nagorno-Karabakh territory lies in the mountainous South Caucasus region between between Black Sea and Caspian Sea. So Black Sea, Caspian Sea. I'm just drawing a schematic here. This is just to make you understand. It is not to scale. ठीक. तो यहाँ पे आपका Nagorno-Karabakh region. ठीक है. ठीक है. So Armenia and Azerbaijan fought a war over this region in late 1980s and early 1990s and it has been trigger for the violence. ठीक है. तो ये एक इशू रहा है. अजरबैजान ने रिसेंटली मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था अगेंस्ट द ब्रेक अवे Nagorno-Karabakh region. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट डोंट डू दिस रॉन्ग. Which Indian city is the host of Winderji India Summit 2023? So the answer is Chennai. 5th International Trade Fair and Conference. The Winderji India Summit 2023 is set to commence in Chennai, the capital of obviously Tamil Nadu, as a part of the Indo-Danish Energy Partnership. ठीक है. A big delegation will be participating. So Denmark had a renewable energy capacity has a 2.3 gigawatt. तो Denmark 2.3 gigawatt है. तो this will be held at Chennai as a part of 5th International Trade Fair and Conference. That's Winderji India Summit 2023. Next is ICMR, Indian Council of Medical Research, approves to conduct TrueNet test to detect which infection. तो नीपा वायरस के लिए है ये.
तो नीपा वायरस के लिए कौन सी ये आपका टेस्ट है? ट्रू नेट टेस्ट फॉर नीपा वायरस. TrueNet test for Nipah virus. ICMR has granted the state permission to conduct TrueNet test in certain hospitals to support Kerala's effort to combat Nipah virus outbreak. ठीक है? They use portable smart chip based battery operated RT-PCR kits. So only hospitals equipped with level 2 biosafety facilities and which have strict protocols. So they are allowed to do these. So TrueNet tests Nipah virus के लिए है अभी केरला में. This was done. Next is, what is the new award instituted to honor scientists in India? तो इसका आपका जवाब है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑनर स्टार्ट किया है. विल बी प्रेजेंटेड अंडर 4 कैटेगरीज. विज्ञान रत्ना फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, विज्ञान श्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, then Vigyan Yuva Shanti Swaroop Bhatnagar to encourage young scientists, and Vigyan Team for recognizing team of scientists. So the awards will commence from 2024 and will cover 13 domains ranging from physics to environmental science. So this is very, very important. This becomes very, very important. So keep an eye on this one. ठीक है? 2024 से ये स्टार्ट हो जाएंगे. क्या है ये? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. What is the name of the first indigenous aircraft carrier of India? INS विक्रांत. ठीक है? तो इंडियन नेवी has submitted a proposal for government for the construction of second indigenous aircraft carrier IAC-2. Cochin Shipyard Limited delivered the first indigenous aircraft carrier INS विक्रांत in 2022. ठीक है? तो INS विक्रांत फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर. ठीक है? तो ये डेवलप किसने किया? कोची शिपयार्ड लिमिटेड. ठीक है? सेकंड का भी ऑर्डर इसको दे दिया गया है. ठीक है? तो INS विक्रांत फर्स्ट था, सेकंड का ऑर्डर भी दे दिया गया है. नेक्स्ट इज विच सिटी होस्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट गोल समिट इन 2023? द आंसर इज न्यूयॉर्क. लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड गैदर्ड. ठीक है? फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क. So the declaration outlines the shared commitment to create sustainable inclusive world by 2030. So that is the thing. UN Secretary General's proposal for a SDG stimulus. ठीक? तो न्यूयॉर्क में ये समिट हुई थी आपकी. So the summit happened in New York. Next is, India has partnered with which country to deploy 10,000 made in India electric buses across Indian cities? So this is with the United States, India and US. ठीक है? The partnership announced during PM's visit to White House this year, expanding the options for public transportation in India for cleaner and healthier communities. ठीक है? India US 10,000 electric vehicles. ठीक है? 10,000 electric vehicles. This becomes important. किस कंट्री के साथ इंडिया ने किया है? नेक्स्ट इज 64 योगिनी टेम्पल्स. ठीक है? ये कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है. UPSC के प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है. Designed by British architects Lutyens and Baker, the old Parliament building served as the Imperial Legislative Council. तो हमारी जो old Parliament building थी, designed by Lutyens and Baker. ठीक है? Lutyens, तभी दिल्ली Lutyens zone कहते हैं इसको. Lutyens and Baker. So they designed the old Parliament building, which was the Imperial Legislative Council during the British rule, and later the Constituent Assembly and Parliament of India. अब the 64 Yogini temple in Mitaoli, Madhya Pradesh is believed to have inspired the old Parliament building, circular structure. Built in the 14th century, this temple has 64 powerful yoginis, which features a unique architectural elements, including a hypaethral design with no roof. Hypaethral design with no roof
तो इंडिया की ओल्ड पार्लियामेंट को किसने इंस्पायर किया था? तो 64 मीन 64, द 64 योगिनी टेम्पल। कहाँ पे है ये? विच प्लेस? मिताउली इन MP। ठीक है, just remember this fact. So this is very very important since we have shifted to the new parliament building, so you should know a little bit about the old parliament. So 14th century temple है, 14th century. Next is which Indian armed force conducted the operation Sajak drill? Indian Coast Guard ने ये operation किया है to enhance coastal security. ठीक है, effectiveness of coastal security measures and फिशरमैन में अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो इसका आंसर है आपका कोस्ट गार्ड। ठीक है, कोस्ट गार्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट आपका आ गया विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू लॉन्च द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीमा सुगम। बीमा सुगम IRDI, तो IRDI ने लॉन्च किया प्लेटफॉर्म बीमा सुगम is set to launch the groundbreaking online platform Bima Sugam, which aims to become the world's largest online platform for insurance products. तो IRDI आपको पता है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो it will be world's largest online market for insurance products. World's largest market for insurance products. ठीक। नेक्स्ट इज होयसाला टेम्पल्स। इनको रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला, तो ये आपको पता है कर्नाटका में सिचुएटेड हैं, दे आर सिचुएटेड इन कर्नाटका। ठीक है, सो यूनेस्को हैज़ ऑफिशियली एडेड कर्नाटका सेक्रेड टेम्पल्स ऑफ होयसालास इन द प्रेस्टीजियस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, तो ये 2014 से टेंटेटिव लिस्ट में थे, अब इनको रिकग्निशन मिल गया है। ठीक है, सो दीज सेक्रेड टेम्पल्स ऑफ होयसालास इंक्लूड द टेम्पल्स एट बेल्लूर, द चेन्नाकेश्वरा टेम्पल, हेलेबी टेम्पल featuring star shaped architectural patterns. So just remember these three types of temples here: the Channakeshwara, the Halibut and the Bellur temple. ठीक है, so this is important. Next is the National Green Tribunal ordered a ban on cruise ships operating on water bodies of which state? मध्य प्रदेश। तो NGT ने बैन कर दिया है cruise ships operating in MP's water bodies, including the upper lake of Bhopal, citing environmental concerns. ठीक है, cruise ships in MP were found to have environmental issues including noise pollution, inadequate waste disposal and sewage contamination. ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की वाटर बॉडीज में NGT ने बैन लगा दिया है क्रूज शिप्स बैंड ऑन मध्य प्रदेश MP's वाटर बॉडीज। तो ये आपने गलत नहीं करना है एकदम से, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपका सवाल। डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स इज अ प्रोग्राम एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो यूनाइटेड स्टेट्स का है। US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिक्लेयर किया है द डेफर्ड एक्शन फॉर द चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम एज इलीगल। So although it did not order the immediate termination of protections and work permits for nearly 580,000 or 580,000 DACA recipients, so this was established in 2012 and allows undocumented immigrants brought to US as children to apply for deferment of legal action. ठीक है, तो ये आपका US से रिलेटेड है, इलीगल जो इमिग्रेंट से रिलेटेड है। Which state chief minister has been awarded as the Lee Kuan Yew Exchange Fellowship? So ये असम के CM को श्री हिमंता विश्व शर्मा has been awarded as Lee Kuan Yew Exchange Fellowship, recognizing his contribution to development of Assam. ठीक है, the fellowship is named after Singapore's founding father
Mr. Lee Kuan Yew, and awarded to individuals who have made significant contribution to their nations and bilateral relations with Singapore. So he becomes the first CM of Assam to receive this honor, joining the ranks of distinguished recipients like Arun Shourie, Shivraj Singh Chauhan, and Montek Singh Ahluwalia, who was the former Deputy Chairman of the Planning Commission, which is now defunct, taken over by Niti Aayog. So which state announced Mukhyamantri Shramik Kalyan Yojana? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. So Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, ठीक है, has announced the launch of Mukhyamantri Shramik Kalyan Yojana as a part of National Labour Day, ठीक है. तो ये maternity benefits मिलेंगे, natural death compensation, तो सारे जो आपके श्रमिक मीन्स लेबर के वेलफेयर के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किए. नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज एनफोर्स्ड यूरोपियन यूनियन बैन ऑन ऑल रशियन रजिस्टर्ड पैसेंजर कार्स एंटरिंग इंडिया? आंसर इज पोलैंड. Poland has begun enforcing EU ban on all Russian registered passenger cars entering country in line with the sanctions against due to Ukraine war. The move comes shortly after Lithuania, Latvia, and Estonia. These are the three Baltic states. Baltic states कहते हैं हम तीनों को कि these are known as the Baltic states. Lithuania, Latvia, and Estonia. Lithuania, Latvia, and Estonia also implemented this ban on Russian licensed number plates. ठीक है. The decision reflects EU's stance on Russia's actions. So, अभी latest in the series of banning Russian licensed plates is Poland. So Poland becomes the latest entrant to ban all Russian registered passenger cars entering the country. ठीक है. EU का जो बैन है. ठीक. Next is which state launched mobile van program to promote natural farming? So the Himachal Pradesh का ही initiative है mobile van program as a part of प्राकृतिक खेती खुशल किसान योजना. तो इको फ्रेंडली नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं इसमें. ठीक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक एंड केमिकल फ्री फार्मिंग. तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. तो किस स्टेट का है ये? हिमाचल प्रदेश का स्टेप है. मोबाइल वैन प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना. इट इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज which state launched गृह आधार एंड शावत बाजार इनिशिएटिव्स? तो गोवा ने ये लॉन्च किया है. गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, he distributed Griha Aadhar sanction orders, a program aimed at financially supporting homemakers and improving their quality of life. He also launched Shavathe Bazaar. What is that? A digital initiative empowering Goan entrepreneurs and self-help groups under the Swayambura Goa program. The government aims to provide क्या इसमें करेगी? Free training to women in packaging and selling items under स्वयंपुरा गोवा. तो इसमें क्या होगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, फ्री ट्रेनिंग. शावते बाजार में फ्री ट्रेनिंग. ठीक है. टू वुमेन इन पैकेजिंग एंड सेलिंग दोज आइटम्स. ठीक. तो ये एक इनिशिएटिव है गोवा सरकार का, गृह आधार और शावते बाजार. ठीक है. नेक्स्ट इज एज पर द रीसेंट रिसर्च एक्सपोजर टू विच एलिमेंट वाज लिंक्ड टू 5.5 मिलियन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस ग्लोबली इन 2019? आंसर इज लेड. तो लेड की वजह से, लेड के एक्सपोजर की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हुए थे. ठीक है. 2019 में ग्लोबली. विच इंडियन स्टेट लॉन्च फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम्स इन स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर तमिलनाडु? तेलंगाना. तो फर्स्ट पहले जो फ्री ब्रेकफास्ट स्कूल फॉर स्टूडेंट्स पहले लॉन्च किया आपके तमिलनाडु ने. एंड नेक्स्ट तेलंगाना.
तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ठीक है, तमिलनाडु एंड तेलंगाना. National Judicial Data Grid is associated with which country? India. दो सुप्रीम कोर्ट ने ऑनबोर्डेड किया है इन इट्स केस ऑन द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड. द NJDG portal is a national repository of data related to cases instituted, pending and disposed of by courts all across the country. ठीक है. Next is which space agency released the findings after a year-long study into unidentified flying objects? तो नासा ने UFOs पे स्टडी करके एक फाइंडिंग्स रिलीज की है. ठीक है. तो व्हाट इट सेड, द स्टडी ऑफ UFOs will require new scientific techniques including advanced satellites as well as a shift in how flying objects are perceived. तो ये नासा की स्टडी की है UFOs पे. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज बुध इंटरनेशनल सर्किट. वेयर इज बुध इंटरनेशनल सर्किट? ये आपको पता है ग्रेटर नोएडा में जो Formula 1 ट्रैक वहाँ पे डेवलप किया है. बुध इंटरनेशनल सर्किट इज इन ग्रेटर नोएडा. सो दिस इज जस्ट अ लिटिल फैक्चुअल क्वेश्चन हियर. द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हैज बीन लेड डाउन इन विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश में. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has laid the foundation stone of this at BPCL's बीना रिफाइनरी इन मध्य प्रदेश. तो ये रिफाइनरी कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए. ये सवाल पूछा जा सकता है, बीना रिफाइनरी कहाँ पे है? तो ये आपकी MP में. ठीक है. तो स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरी विल बी डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 49,000 रुपीज. ऑल दीज थिंग्स. तो MP में है ये. Next is which city is the host of 4th G20 Sustainable Finance Working Group meeting? So that is again Varanasi. So the meeting witness engagement 80 delegates. तो ये important नहीं है. Important क्या है कि कौन सी organizations थी इसमें? World Bank, NDB, NFGS amongst others. So that is about it. Varanasi. Next, when was the National Logistic Policy launched in India? It was launched in 2022. India marks 1 year of the launch of National Logistics Policy to complement, in fact, the PM Gati Shakti National Master Plan. The National Logistics Policy was launched. So PM Gati Shakti, National Monetization Pipeline, all these things are, launched to improve and enhance overall infrastructure viability in the country and to spur the developmental projects. While the PM Gati Shakti National Master Plan addresses integrated development of fixed infrastructure and network planning, the National Logistic Policy addresses soft infrastructure and logistics sector, including process reforms, logistics services, digitization, human resource, and etc. etc. ठीक है. Next is what is the name of the festival organized by the ICCR, Indian Council of Agricultural Research? The name is Vaishali. So organize a festival of democracy वैशाली इन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार. तो 15 सितंबर को ये वर्ल्ड ओवर सेलिब्रेट किया गया. सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी. तो वैशाली बिहार में विच ट्रेस्ड वेयर द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर ट्रेस्ड. ICCR क्या है? ICCR आपको पता है ये MEA की एक ऑटोनॉमस बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, to promote India's cultural, soft power in other countries. So वैशाली इस फेस्टिवल का नाम है. तो ICCR ने ऑर्गेनाइज किया है कहाँ पे? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार. Next is what is the name of the campaign launched by the Union Health Ministry to mark Prime Minister's birthday? Ayushman Bhav campaign. ठीक है. So Union Health Ministry it launched this Ayushman Bhav campaign September 17, the birthday of our Prime Minister. The comprehensive campaign was inaugurated by President, Draupadi Murmu to provide extensive healthcare services. India handed over G20 presidency to which country? तो that you should know. Brazil को दी गई है अभी. ठीक है. Indian Prime Minister Shri Narendra Modi gave ceremonial gavel. So that gavel was handed over to Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva.
ठीक है, ट्रांजिशन सेरेमनी होती है छोटी सी, यहाँ पे केवल हैंड ओवर किया जाता है. सो ब्राज़ील विल ऑफिशियली टेक ओवर द मैंटल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑन December 1 दिस ईयर, मीन्स 2013 की बात कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज विच नॉर्थ इंडियन स्टेट अनवील्ड इट्स न्यू स्टेट एजुकेशन पॉलिसी. तो it's not North Indian state. So which Indian state rather? It would have been which Indian state? The answer is West Bengal. So West Bengal government has come up with State Education Policy 2023. ठीक है. Recommends 3 language formula for classes 5 to 8 with emphasis on Bengali. ठीक है. It recommends Bangla as a subject may be introduced from classes 1 to 10 students, other mediums of instruction. ठीक है. तो ये वेस्ट बंगाल की एक नई स्टेट एजुकेशन पॉलिसी. L1 specified in the Aditya L1 observatory is what? It's a Lagrange's point, first sun earth Lagrange's point. तो टोटल 5 Lagrange's point है जो 4 important है. Aditya L1 फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है टू स्टडी सन फ्रॉम अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द फर्स्ट सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट. ठीक है, विच इज रफली 1.5 million square kilometers from the earth. ठीक है. द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अर्थ बाउंड मैनूवर्स सक्सेसफुली परफॉर्म. ठीक है. तो मैनूवर्स आर बीइंग परफॉर्म ड्यूरिंग ऑल दिस. सो ओवरऑल दिस इज ये आपके लैग्रेंजेस पॉइंट है. L1 में इट इज़ थोड़ा सा पास है. तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो आई थिंक इट इज़ इन L3, आई एम नॉट श्योर. तो लेट्स नॉट टेक दैट. सो ये आपका लैग्रेंजेस पॉइंट है आदित्य L1 में. L1 मीन्स लैग्रेंजियन पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट इज विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द कलाइंगर मगलेर उरमाई थोगाई स्कीम, वुमेन्स बेसिक इनकम स्कीम, तमिलनाडु में. तो ये नाम याद रख लीजिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में. अगर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द्रविडियन आइकन CN अन्नादुराई 15 सितंबर को तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन लॉन्च 1000 monthly financial assistance scheme for women. The state identified 1.06 crore women that will benefit from this Kalagnar Magalir Urumai. Next question is scheme that is. So India recently organized its first investment forum with which country? So the answer to this is Saudi Arabia. So India Saudi Arabia Investment Forum 2023. It was organized in New Delhi. So this is the first formal investment symposium between the two nations. So over 500 companies were there. Saudi Crown Prince had previously announced an investment of about $100 billion in various sectors of Indian economy. ठीक है. The forum had a lot of MOUs were signed. So what you need to remember here is that India, Saudi Arabia, so they organized their first investment forum. ठीक. And they have promised or $100 billion investment in various Indian economy in various sectors to boost investment climate. Next is which city is the host of workshop on business responsibility and sustainability reporting? The answer to this is Mumbai. Indian Institute of Corporate Affairs in partnership with UNICEF and the National Stock Exchange. National Stock Exchange has organized this workshop in Mumbai. ठीक है. So this is rooted in the 9 principles of National Guidelines for Responsible Business Conduct. ठीक है. It mandates that the top 1000 listed companies to disclose their environmental, social and governance aspects, that is ESG aspects. So that you need to remember. So this is an initiative of this is organized by the IICA, Indian Institute of Corporate Affairs, UNICEF and National Stock Exchange. So this is what you have to remember है. ठीक है. 3 बॉडीज हैं. कहाँ पे हुई है कॉन्फ्रेंस?
BRSR conference. It happened in Mumbai. Next is Araku coffee, which was one of the gifts presented to the leaders of G20 summit. So which state, कौन सी स्टेट है? अराकू वैली आपकी आंध्र प्रदेश में आपकी, ठीक है, अराकू वैली. Araku Valley is in Andhra Pradesh. ठीक है. Then you have during the recent G20 summit in Delhi, world leaders were presented with the selection of handcrafted gifts, ठीक है, representing India's diverse cultural heritage. तो क्या क्या दिया गया था? तो ये आपको इसमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला आ गया इसमें कन्नौज का फेमस इत्तर, फिर कश्मीर का सैफरन और जिसको ज़ाफ़रान भी कहते हैं, अराकू कॉफ़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड टी फ्रॉम नीलगिरीस, ठीक है. दीज आर द 4 थिंग्स. क्या क्या है? कन्नौज फेमस इत्तर, वो जो सेंट होता है, ठीक है, दैट परफ्यूम, दैट कंडेंस परफ्यूम. देन ज़ाफ़रान, इसको लोकली ज़ाफ़रान कहते हैं, और सैफरन फ्रॉम कश्मीर. देन यू हैव नेक्स्ट अराकू कॉफ़ी, अराकू कॉफ़ी दैट इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश. एंड देन नीलगिरी टी फ्रॉम नीलगिरीस, ठीक है, राइट. सो गिफ्ट ऑल्सो फीचर्ड सुंदरबन का हनी, सुंदरबन हनी ऑल्सो इज देयर, सुंदरबन हनी. जिगराना इतर फ्रॉम कन्नौज, यही जो हमने पहले पढ़ लिया. पश्मीना शॉल फ्रॉम चांगथांगी गोट्स, ये जो आपका लद्दाख वाले एरिया में. और खादी स्कार्फ सिंबलाइजिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड कमिटमेंट टू कॉइन्स एंड स्टैम्प्स. सो दिस टॉपिक फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है. इसमें कौन कौन सी चीज़ें, बस ये कहाँ से है? तो जिगराना इतर आपका कन्नौज से है, तो इसको यहीं पे हम लिख देंगे, जिगराना इतर. ये इतर था जिगराना इतर. और पश्मीना शॉल आपको पता है शांगथांगी गोट से बनती, ठीक है. वरुणा द बायलैटरल एक्सरसाइज इज बिटवीन द नेवीज ऑफ विच 2 कंट्रीज. तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में है. फेज़ 2 21वीं एडिशन का, ये आपका अरेबियन सी में हुआ, ठीक है. सो 21st एडिशन ऑफ वरुणा हैपेंड इन अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी. सो वरुणा बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. एक गरुड़ भी है आपकी एयरफोर्स की, वो भी फ्रांस के साथ है. तो दीज फैक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर. 21st एडिशन हुआ था, ठीक है. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स. सो ये आपका ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर राइट्स आपका हुआ था नई दिल्ली में. आर ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, शी इनॉग्रेटेड इट, ठीक है, at the ICAR Convention Center, New Delhi. So this was held at the ICAR Convention Center in Nai Delhi, in New Delhi. Okay. So this becomes very very important. Which Indian tennis player won the runners-up trophy in the US Open doubles final? Rohan Bopanna won the runners-up trophy in the US doubles final, US Open's doubles finals. So he paired with Matthew Abaddon, so the Australian guy, and they lost to defending champions Rajiv Ram and Joe Salisbury in the final of US Open. So Rajiv Ram and Joe Salisbury became the first men's double team at the US Open to achieve 3-peat in more than 90 years. ठीक है. Next is India recently organized the meeting of
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल विद विच कंट्री? तो अभी हमने देखा था जो समिट हुई थी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ ही, तो ये आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल भी सऊदी अरेबिया के साथ है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो ये नाम आपने याद रखना है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। So marking the first meeting of the India-Saudi Arabia Strategic Partnership Council established in 2019. So this was established in 2019. The council consists of two main pillars. क्या है? Political security, social and cultural cooperation and economic and investments. ठीक है, तो ये दो इसके वो हैं, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। Sorry. Alright, so moving on with this, next question is India Middle East Europe Economic Corridor। तो G20 में ये इस बार IMEC, ठीक है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। G20 में अभी हमने देखा था जोहान्सबर्ग में ये समिट हुई थी, तो वहाँ पे इट वाज ब्रॉट अप। तो ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 वॉज इन इंडिया, दैट वाज ब्रिक्स की बात की थी, तो G20 इंडिया में ही हुआ, बेग योर पार्डन। सो ऑन द sidelines of G20 summit, several countries including India, US, Saudi Arabia and the European Union, UAE, France, Italy, so इन्होंने एक MOU साइन किया for this IMEC इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बनाने के लिए, to expedite cooperation in this field. ठीक है। Next is which bank launched the nation first transit card to facilitate seamless customer commuting experience? And the answer to this is State Bank of India. State Bank of India, which is country's largest lender, has launched the nation first transit card. ठीक है, SBI ने लॉन्च किया है कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, इजी टिकटिंग, फेयर पेमेंट्स मेट्रोज में थ्रू अ सिंगल कार्ड। ठीक है, नेशंस फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जिससे आप सारी पेमेंट्स कर सकते हो। किसने लॉन्च किया है आपका? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज लार्जेस्ट बैंक। विच इंस्टीट्यूशंस recommend the cross-border cooperation and information sharing in a joint report to G20 nations? तो इसका आंसर है IMF, FSB। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड हैव रिकमेंडेड cross-border cooperation info sharing for consistent regulation of crypto assets। ठीक है, crypto assets के लिए these are the two bodies। Just keep a tab on these important international organizations। Bretton Woods organizations हैं आपकी, फिर आपका WTO है, आपका ब्रिक्स हो गया, आपका SCO हो गया, all these international organizations should know the headquarters। जैसे इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपका लॉयन में है, LYON। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली जॉइन यूरोपियन यूनियन साइंस रिसर्च प्रोग्राम हॉराइजन यूरोप? तो यूके ने ज्वाइन किया। यूके आपको पता है EU छोड़ चुका है, तो उसने हॉराइजन यूरोप ये प्रोग्राम EU का ज्वाइन किया है। नेक्स्ट इज व्हाट डज I स्टैंड इन ICRR? सो दैट स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंटल CRR। ठीक है, CRR आपको पता है कैश रिजर्व रेशो। तो RBI हैज अनाउंस्ड द फेज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंक्रीमेंटल CRR। ठीक है, इसको 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? टू अब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी कॉज बाय वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो एक्सेस लिक्विडिटी को कर्व करने के लिए ये इंक्रीमेंटल CRR शुरू किया गया था। नेक्स्ट इज इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेटल WTO पोल्ट्री डिस्प्यूट इन विच कंट्री? USA में। ठीक है, इंडिया एंड US हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू सेटल देयर लॉन्ग स्टैंडिंग WTO पोल्ट्री डिस्प्यूट। ठीक है, तो इंडिया विल रिड्यूस टैरिफ्स ऑन वेरियस अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रोजन टर्की, फ्रोजन डक एंड ऑल दीज पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इंडिया टैरिफ्स रिड्यूस करेगा। A report by which institution has stated that the window to reach climate goal is rapidly closing? तो UN ने कहा कि जो हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट रखा है एंड टू कीप इट एज लो एज पॉसिबल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस,
this seems like a pipe dream. It looks very difficult that we may be able to achieve this. Currently we are 1.19 degrees Celsius, so very small window we have here. Okay. New report from UN emphasized the urgency of addressing the climate change. ठीक है, जो आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो विंडो है वहाँ तक रखने का, that seems very difficult to keep the global temperatures at that level. So as a part of the global stocktake mandated by the Paris Climate Agreement 2015 COP21, it highlights some progress has been made, but countries are far from achieving their desired objectives. So this becomes very important, an issue of global concern. As we know that, we need to understand here that climate change is the global tragedy of the commons. Climate change is the global tragedy of the commons. It is the global tragedy of the commons. And in fact, Greta Thunberg की statement काफी popular है. Greta Thunberg, Swedish climate activist, she said that I don't want you to relax. I want you to panic. What she means to say here is that कि थोड़ा सा अर्जेंसी की ज़रूरत है. We need to take urgent steps towards climate change. So that is what UN has also observed. ठीक है. NASA's MOXIE successfully generated oxygen on which planet? Mars. So US Space Agency NASA has announced that Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, MOXIE. So Mars Oxygen In Situ means at that place itself, utilization experiment, which is on board the Perseverance Mars rover. तो Perseverance rover किसका है? Perseverance ये नासा का है और मार्स में जाएगा. ठीक है. Successfully in generating oxygen. The equipment demonstrated its ability to convert Martian carbon dioxide into oxygen. This is an important thing. पहले तो ये याद रखो, MOXIE ये जो एक्सपेरिमेंट है ये नासा द्वारा, it is on board the NASA's Perseverance rover. ठीक है, नासा का Perseverance rover. ठीक है, मार्स. तो वहाँ पे ऑक्सीजन सक्सेसफुली क्रिएट की है इसने मार्शियन CO2 से. ठीक है. तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट. जस्ट कीप अ टैब ऑन दिस वन. ठीक. काला जीरा राइस इज फेमस food product from which state? So it is from Odisha. So a private company, Javik Shri Farmers Producers Company, applied for GI tag for the Kala Zira rice of Koraput. So Kala Zira rice, Koraput, Odisha. ठीक है, Koraput Odisha की ये variety है. ठीक. Next is, which city topped the Swachh Vayu Sarvekshan Clean Air Survey? So Indore, you know, it has been doing great work in cleanliness for many years now. So Union Environment and Forest Minister Bhupendra Yadav, so he announced the results of Swachh Vayu Sarvekshan Clean Air Survey. So Indore has topped, just claimed the top spot. ठीक है, in million plus cities. ठीक है, and Agra got the second rank, followed by Thane. So we have to do the rankings here. Indore got the first, then you have Agra, and third is Thane in Maharashtra. ठीक. Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupendra Yadav, he declared the results. Which country has launched Deccan High Level Principles on Food Security? So India under its G20 presidency has introduced two initiatives that have gained consensus with the G20 Agricultural Deputies Group. First is Deccan High Level Principles on Productivity and Nutrition, and the second is an international research initiative focused on millets and ancient grains.
पहले आपका ये फर्स्ट एंड सेकंड आपका मिलेट्स एंड एंशिएंट ग्रेन्स पे. 2023 was celebrated as the International Day of Millets, International Year of Millets and Ancient Grains. ठीक. Moving on, next, Timor-Leste, which was seen in news recently, is located in which region? So it is in Southeast Asia. ठीक है. Timor-Leste, during the ASEAN-India Summit in Jakarta, Prime Minister Modi announced decision to establish an embassy in Timor-Leste. ठीक है. Timor-Leste having joined ASEAN as an observer in 2022, so it joined as an observer in ASEAN in 2022. ठीक. Has gained importance in the regional diplomacy. ठीक है. The move to open an embassy in Timor-Leste signifies, सो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करने का. और जैसे हमारा टारगेट है, वी वांट टू एस्टैब्लिश अलॉन्ग विद फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये टारगेट है कि चाइनीज़ हेजमनी को हमने काउंटर करना है. आवर ऑब्जेक्टिव इज टू काउंटर द चाइनीज़ हेजमनी इन द इंडो पैसिफिक, चाइनीज़ हेजमनी. So for that we are taking all these initiatives, जैसे SCRI आ गया, आपका Quad initiative आ गया, then strengthening our ties with ASEAN countries. All these steps we are taking to ensure that China's dominance is checked, and collaboration with the US, Japan, Australia, Turkey, other countries, that's in the same direction. Which institution has organized 2023 Regional Cooperation and Integration Conference? So ADB, Asian Development Bank. So India has recently presented its PM Gati Shakti Master Plan at the Regional Cooperation and Integration Conference organized by ADB in Georgia. ठीक है. The conference aimed to enhance regional cooperation through economic corridor development. ठीक है. तो ये कहाँ पे हुई थी कॉन्फ्रेंस? जॉर्जिया में. ठीक है.